Hey guys, how's everyone? Uh, there's this topic I wanted to talk about for very long, or everyone always is talking about a perfect cycle for steroids and all. So I wanted to talk about this thing called DNB, dehydroboldenone, dehydrotestosterone, methyl 1 testosterone, 1 testosterone. These all are one. ये सब एक ही हैं, एक ही चीज के नाम है. डिहाइड्रोबोल्टेनॉन भी वही है, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी वही है, मिथाइल 1 टेस्टोस्टेरोन भी वही है, 1 टेस्टोस्टेरोन भी वही है. So there is this different a way to call it, but it is and it will be the strongest steroid ever made in human life. It is way more stronger than even Trenbolone. जो सच्चाई है. That is the reality. Just let me. Okay, so this is the most powerful ever made steroid ever, but it is also very dangerous. But the dangerous thing is कि people always keep talking कि it is liver toxic. One testosterone के बारे में सुनते हैं, नेट पे पढ़ते हैं, प्रो हार्मोन और ये सब वो लिवर टॉक्सिक होता है. नहीं नहीं, डायमोबॉल T3 के बारे में बात नहीं हो रही. I am talking about something very high, and this is way ahead of these two things. This is a way ahead of them. So the thing is कि it is liver toxic, but उतना ही जितना it is 7 alkaline, so it is as much liver toxic as stanozol, anadrol, जैसे सारे अलग दूसरे स्टेरॉइड है, eatable steroids. But it is being hyped because it is very least manufactured. बस बढ़िया अर्पण. Just give me 2 minutes, I'll talk to you. Huh? So this is the one which is least manufactured, बहुत rare, very difficult to find it, and it is very difficult to find it. But the thing is, it works. It can transform you from 2 to 3 weeks, or maximally 4 weeks. You will be like it. There are visible changes in 4 weeks. It works like nothing else can work like it. जो सच्चाई है. But there is an issue. जो सच्चाई है, जो issue है इसके साथ, that is liver toxicity. और एक, you have to be safe with the mg you are taking. If you are taking by mouth, it is recommended from 10 to 20, maximally 30 mg. ठीक है. And if you are injecting it, dehydroboldenone साइपोनेट के नाम से आता है, और if you are injecting it, you can go up to 200 mg a week. People can go 400 mg a week, and you will see insane gains. DNB के नाम से आता है. बहुत मुश्किल है ढूंढने में मुश्किल इसलिए है क्योंकि कंपनियां मैन्युफैक्चर करना भी नहीं चाहती, क्योंकि डीएनबी के रिजल्ट इतने इंसेन हैं कि जो लोग डीएनबी की साइकिल कर लेते हैं उसके बाद दे डोंट वांट टू रन एनी अदर साइकिल. एंड डीएनबी इज नॉट दैट expensive as ट्रेन. It is least expensive and still it goes way better and ahead. सबसे बड़ी बात, it doesn't gain any water, doesn't raise your estrogen. Yeah, it does drop your natural test. That is very much normal with any steroid you use, or any hormone you use, or any pro hormone you use. They are gonna do it, but the gains are gonna be insane, like lean, pure muscle, insane gains, and the gains are gonna be like massive. You're looking massive in 4 5 weeks. 6 weeks के अंदर it's like a transformation. That is the truth. In 6 weeks you're gonna see transformation straight away. ये भी नहीं कि भाई गेन ठीक है, ट्रांसफॉर्म हुआ है, कुछ हुआ है, लाइक द पीपल हु यूज बोल्डेनॉन साइकिल और टेस्टोस्टेरोन साइकिल. लेकिन इसके साथ इट इज लाइक इनसेन ट्रांसफॉर्मेशन. बाय इनसेन आई मीन रियली इनसेन. मैंने एक दो अपने स्टूडेंट्स को करवाई है साइकिल, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मिले तो मिल लगाना, ना मिले तो प्लीज डोंट यूज एनी बुलशिट कॉपीज ऑफ देम. और डिहाइड्रोबोल्डेनॉन अकॉर्डिंग टू मी, or I think any who is a classic bodybuilder or who has used it, वैसे तो recommendation बहुत कम मिलेगी क्योंकि ये मिलेगा ही नहीं. It doesn't gain any water, it doesn't hold any water. कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं दिखता जो विजिबिलिटी में हो सिवाय पंप के. पंप्स आर गोना बी insanely high.
कोई प्री वर्कआउट नहीं पैदा हुआ जो इतना पंप दे सके जो पंप डिहाइड्रोबोल्डिनॉन और वन टेस्टोस्टेरोन अकेले देते हैं। ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं, जस्ट चेंजेस आर देयर इन इंजेक्टेबल एंड द टैबलेट फॉर्म। और डिहाइड्रोबोल्डिनॉन को ढूंढना मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, like you have to search all over the web, all over the world to get a bottle of 10 ml. But if you get it, that will make you, like 10 ml of it is gonna run for 5 to 6 weeks, or 10 ml is gonna give you more results than a trenbolone cycle for like 8 to 10 weeks. You can buy it, try it, and you can, if you are able to get one, definitely go for it. According to me, यूज किया है सामानो ट्राई किया है, DNB is the end. Not, I'm not talking about DNP. It's a fat burner. I know it is banned and all the shit. But ना मैं फिटर की ना DNP ना मैं कटिंग साइकिल की बात करूँ. But DNB, dehydroboldenone, works in cutting cycle, gaining cycle, any freaking cycle you are doing, it runs in it. If you want, you can run testosterone with it. But alone, DNB, insane. You don't need to eat any tablet with it. You don't need to eat any any other steroid with it. It on its own, it's on its own. कोई साइकिल रन करने की जरूरत नहीं है उसके साथ, कुछ मतलब मैच करने की जरूरत नहीं है, बस यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ मिल्क थिसल सुबह ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में। प्रोटेक्शन जो होती है वो यूज करो। एनिमल पैक, ट्राई यूजिंग एनिमल पैक, इट हैज गुड लेवल ऑफ मिल्क थिसल with vitamin and minerals, so it gives NAC also. NAC is very good with DNB cycles. It also works very well. So I will suggest guys to use NAC. But guys, if you really want to gain pure muscle, आंखें बंद करके मैं 3 नाम बता रहा हूँ एक ही सामान के, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में उसको अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। वन इज DNB, dehydroboldenone. Second is dehydrotestosterone. Third is 1-testosterone. And this one more, fourth is methyl 1-testosterone, M1T. 1T, M1T, DNB, DNT. This is all one. And this was found in 1969. According to me and what I have seen, मेरे हिसाब से तो Arnold and all have tried it. Cutting के लिए is like Prince, you can try it anytime. This is not gonna gain you any water gains, but you're gonna get ripped because you're gonna lose water because of it. DNB does make you lose water. It also drops estrogen a little bit. पता नहीं कैसे, but it does it. I have to make more research कि वो कैसे करता है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं लैग कर जाता हूँ भाई. I'm not the developer of the steroid, but yeah, it does work. It does work like insane. Diet with it. This is very important. Eat as much carbs as you can. Rice is the first priority. White rice. जितना white rice खा सकते हो खाओ. जब आप DNB या 1T या M1T या DNT पे हो, जितना राइस खा सकते हो, जितने कार्ब्स लोड कर सकते हो, सिंपल कार्ब्स, दैट इज गुड. स्वीट पोटैटो, white rice. Eat as much protein as you can, because protein is going to synthesize very quick, because it does promote synthesizing of protein. Or like carb ratio should be like 2:1, like 2 carbs per 1 protein. अगर आप 250 grams of protein ले रहे हैं तो around twice, like 300 to 400 grams of carbs जरूर intake करो. इनफैक्ट उससे भी ज्यादा करो, because more the carbs, the more DNB shows the result. Very insane, but it shows the result. You're not gonna gain any fat. जब आप DNB की साइकिल पे हो, फैट चढ़ ही नहीं सकता. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि DNB does promote IGF-1 very, like, it just boosts it. People say body gets pumped up to 1600%. That is not 1600, I'll say, but yeah, body does get pumped twice. It's so much insane pump कि एनड्रोल भी फेल हो जाती है उसके सामने. और कोई ऐसा स्टेरॉइड मैंने नहीं देखा अभी तक जो इतना पंप दे सके. अगर आपने किसी ने 180, 280, 1 का नाम सुना है, जो प्रो हॉर्मोन्स थे, वो भी इसकी वजह से बने थे. Now, Danabol is something else actually. Danabol is totally something else. DNB is something else. दोनों एक नहीं है.
that is totally something else. Danabol को इसके साथ you cannot match. Danabol is totally something else, and this is totally something else. This is, you can say, it has a base of testosterone and a base of boldenone. इसमें 5 esters कम होते हैं boldenone से, और but it effect is totally opposite. Then Danabol just gains water. That is something I will discuss about Danabol in another video, bhai. Definitely. Yeah, Pratyaksh. Hi. इंसुलिन सही भाई, सबसे बेस्ट इंसुलिन फॉर गेनिंग अकॉर्डिंग टू मी इज, द बेस्ट टू बेस्ट इज ह्यूमिसिलिन आर और एक्ट्रा रैपिड, द फास्टेस्ट एक्टिंग. I cannot say that because every steroid was made at that time. You cannot say that Danabol was the only thing used at that time. Trend used at that time. It was found at that time. It was found in 64, 65. Those time it was a peak thing. Trenbolone. Danabol was something which was given to German military, or it was an enhancement drug. जो मैंने जहाँ तक सुना है, Danabol was being given to the whole military group, and he was in the German military. He was living in Austria at that time, and he was working for them. तो उसको भी Danabol बहुत ज़्यादा दी जाती थी. High dosage में 20-30 mg a day was a minimum kind of a thing. Anabol and Danabol were normal for the military at that time. But ऐसा नहीं है, सिर्फ Danabol नहीं था उस टाइम. हर स्टेरॉइड ओपन था. Testosterone was very much open. Boldenone was very much open. The 1T was even before the Boldenone and Trenbolone came to market. But 1T market से इसलिए गायब हो गया because there are very much reasons. One, it's cheap, but it shows the results which are way ahead of Trenbolone. तो अगर मैन्युफैक्चरर उसको मैन्युफैक्चर करेगा, and it is very cheap to manufacture and it's very cheap to sell, but earning state नहीं मिलेगी उसमें. Or if everyone who runs one cycle of 1T is gonna gain like 1 inch of muscle size, don't want to gain again. तो इस वजह से भी people avoid it and companies avoid to manufacture 1T. भाई natural वाली बात तो I won't lie, I am not natural and tried a lot of shit on me. तभी मैं जवाब दे सकता हूँ. अगर मैंने ना किया होता तो मैं how would I have known about it? वैसे भी I love to study and मैं किसी और पे ट्रायल और टेस्ट नहीं करता हूँ. पहले अपने आप पे ट्रायल टेस्ट करता हूँ. So I know about it सभी. And सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल मतलब. So I would love and to see you guys running it because it is not that harmful जैसे मैं कह रहा हूँ. It is very nice. And जैसे जैसे आप लोग अगर ट्राई करो, कोई भी यूज करे, do give me like comments on the results and all. I know the results are insane if you find a real one. वही एक दिक्कत है क्योंकि कंपनीज उसको मैन्युफैक्चर करके राजी नहीं है. यूरोप में अवेलेबल है कुछ कंट्रीज के पास. एक्चुअली नहीं है. डायबिटिक्स के लिए डायनाबॉल इज नॉट सेफ. ये मैंने बहुत बार वीडियोस में बोला भी है. एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट बिकॉज इट ड्रॉप्स द सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन और बहुत ज्यादा स्पीड से गिरती है. सत श्री अकाल जी. सो गाइस, डू ट्राई इट एंड डू टेल मी उसके बारे में. जहां तक मैंने ट्राई किया, आई लव इट और आई वुड रिकमेंड एनीवन इज डायबिटिक और नॉट. इसके साथ इंसुलिन रिकमेंडेशन मतलब सेंसिटिविटी इज स्काई हाई, इतना ऊपर चली जाती है 1T से. मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ. दिस इज द थिंग, आई डोंट रिकमेंड थिंग्स. आई कैन टेल यू अबाउट थिंग्स. इट इज योर ओन कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू योर फिजिक. आई कैन नॉट रिकमेंड एनीवन एनीथिंग. ये सच्चाई है. यू कैन नॉट रिकमेंड एनीथिंग. I can just tell you that this is good and this is bad. Recommendation is upon you. You look yourself on the mirror and say like मेरे को इस चीज की जरूरत है. This will, this is what I need and this is what I don't need. This is all water. This is all muscle. तो वो सब के हिसाब से you have to set it on your own. I can tell you कि this thing will give you this results and this is the negative part of it and this is you can use with it. This is what I do. It's your job क्योंकि वर्कआउट तुमने करना है, एक्सरसाइज तुमने करनी है, डाइट का ख्याल तुमने रखना है.
मैं मेरे बोलने से फ़र्क नहीं आ सकता। तुम्हें अपने आप ही यूज़ करना है, अपने आप ही डाइट करनी है, अपना ही वर्कआउट करना है। एक इंजेक्टेबल मेरे हाथ से लगे या तुम खुद लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी को भी। यू नीड होल पैकेज विद इट। मैं बता सकता हूँ कि इसके साथ ये खा सकते हैं और ये सब कर सकते हैं और ये सब करना ज़रूरी है। नहीं ब्लाइंडली नहीं ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की बात नहीं है। बेटा ऐसा होता है कि यू हैव टू सी योरसेल्फ, ट्रस्ट योरसेल्फ कि मुझे क्या करना है। मैं रिकमेंडेशन उस पे दे सकता हूँ कि तुमने ये यूज़ करना है तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स और पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अगर नेगेटिव्स हैं यू हाउ विल यू रन ओवर देम और अगर पॉज़िटिव्स हैं तो उनको कैसे सस्टेन करना है, ठीक है ना? सो गाइस टेक केयर and I'll be coming live tomorrow also around early at 6:30, 7 o'clock and talk to you guys. If you guys are free, come 6:30. I'm telling you right now, 6 o'clock तक मैं आ जाऊंगा most probably. It's quite late today, and let's see more questions coming up. That's very nice to know. Danawal की जगह I told you that's M1T, methyl 1 testosterone. That works awesome, and it increases the sensitivity of insulin. Evening में 6 o'clock, bro, not in the morning. And Sustanon is totally safe, but you need a good PCT after it. That's for sure. I got that. I see. I don't need the right spelling for it. I know what Sustanon is. I got it. It's not an issue, Prince. Okay. See ya, guys. Good night. Take care.